groundwater. What is groundwater? So simple, the water which is present under the ground, that is known as a groundwater. So when it rains, जब बारिश होती है तो क्या होता है? The rain water seeps into the soil. So कुछ open space होते हैं तो उससे क्या होता है कि some amount of water it goes inside the soil and it goes very deep inside and it gets collected in the ground, which we call it as a groundwater. ठीक है? So the rain water seeps into the soil. तो वो जो बारिश की पानी होती है क्या होता है? बारिश की पानी through the soil it goes deep in the earth. ठीक है? And it gets stored under the ground. And this stored water is called as a groundwater. So we extract this groundwater through wells, hand pump, ट्यूब वेल्स, बोर वेल्स ना. और इस ग्राउंड वाटर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द वेल और अ हैंड पंप ना. सो इन अ वेल और हैंड पंप में पानी कहाँ से आता है? इट इज द ग्राउंड वाटर. ओके. नाउ so how the groundwater gets recharged? Groundwater gets recharged with the rainwater. So rain, it is the rainwater which enters the soil and gets collected as a groundwater ना. So अगर काफी open space होगा तो क्या होगा? Lot of a rainwater will seeps through the soil. बहुत सारे rainwater will get collected under the ground. But in the cities, the main problem is that we have concrete road, right? अब देखो कि इन cities में क्या होता है कि we have the concrete road and the water cannot pass through these concrete road. So that's the reason that now in the cities we don't have lot of groundwater. Or reason is very simple that we don't have open space, na, through which the rainwater will get inside the earth. ना हमारे पास तो ओपन स्पेस नहीं है ना. एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर इज अ कॉन्क्रीट रोड, सीमेंटेड रोड. So how the rainwater will get inside? That's why we don't have enough groundwater in the cities. So uh, we can think of ways. ना there are some method by which we can recharge the groundwater. हम अपने groundwater को recharge कर सकते हैं, like planting trees. अगर आप trees plant करोगे तो उसके आसपास के area में through that area the water will get inside the earth. ठीक है? You can make some soak pits. ना soak pits क्या होते हैं कि there will be some small open area, through that the water will get inside the earth. Through ponds, through rainwater harvesting. ना rainwater harvesting means you see जब बारिश होती है तो छत का पानी या रोड का पानी, we can allow all this water to get inside the earth, to go inside the earth. That is the rainwater harvesting. ना instead अगर हम rainwater harvesting नहीं करेंगे तो ये सारा पानी कहाँ जाता है? In the drain, right? Instead of that, we can allow all this water to get inside the earth and this will help to recharge the groundwater. No? So we can follow this technique to recharge our groundwater. And this is very important nowadays for the cities where we have very limited amount of water. Surface water. Surface water is the water which is available on the surface, right? Like the river, lakes, ponds, stream. अब देखो पानी surface पे होता है. You can directly use it. That is the surface water. River flow. आपने कभी river देखा है? River starts in the mountain. आप देखोगे कि यूजुअली रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? माउंटेन से. एक वाटर का सोर्स होगा, वहां से स्टार्ट होता है वो, एंड देन इट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लैंड टू द लोअर लैंड. आप देखोगे कि हमेशा वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर टू लोअर लैंड ना. सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव एन एक्टिविटी. सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी? यू हैव टू टेक अ न्यूज़पेपर. आप एक न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, एंड यू क्रम्बल इट. थोड़ा सा उसे क्रम्बल कर दो. Okay, and then now take another sheet and place over this crumbled paper. ठीक है, like this. And then now you allow
some seeds to, you can take mustard seeds आपके घर में होगा, you can take the mustard seeds and slowly pour the mustard seeds from a cup from this highest point ना, आप थोड़ा tilted करके रख दो पेपर को and allow the mustard seeds to fall. आप देखोगे कि mustard seeds बहुत सारे different, because the paper is crumbled, it has created lots of grooves here. So the mustard seed will fall from the highest point to the lowest point, but it is following different paths. वो एक सीध में एक लाइन में नहीं फॉल कर रहे, right? It is passing through different curves ना, अपने पेपर को crumble कर दिया, it has formed many curves. So the flow of the mustard seed is according to the curves. Okay, the same thing happens with the river. जब जब river flow करती है, ठीक है, जब river flow करती है, so it starts from the mountain, ठीक है, and according to the path, उसे जैसा path मिलता है, it takes the a form of that. Okay, so water flows from the highest point to the lowest point. Okay, and the shape of the river will be according to the land it gets. Okay, so whatever the type of the land it is getting, whatever the shape of the land it is getting, it will take the shape of that. Okay, sometimes when the जब river का flow बहुत ज़्यादा होता है, then it can change the shape of the land. ठीक है, but generally it will take the shape of the land. अगर curves, there are a lot of curves, the river will take the form of that curves. Okay, similarly the river flow like this. Now based on this activity, let's answer this. What did you observe about the mustard seeds? अब mustard seeds जब आप flow कर रहे हो तो क्या आप observe कर रहे हो? So mustard seeds have rolled down the slope from the top, just like the water flows from the mountains. Similarly ना, जैसे water flow होता है mountains से, similarly the mustard seeds have also rolled from the slope, from the top to bottom. Next, aren't they moving in a straight line or do they spread out in different direction? आप बताओ कि ये straight line में flow कर रहे हैं या different directions follow कर रहे हैं. There are a lot of curves here. So clearly you can see they are not following in a straight path. No? They are spread out in different direction depending on the shape of the paper, just like the river. Are they collecting in some areas? Do they gather like water gathers in lakes, rivers and so on? So आप देखो पिक्चर में क्या हो रहा है कि कहीं पे मस्टर्ड सीड्स आप देखोगे कि कहीं पे ज़्यादा गैदर्ड हो गए हैं. They are collected some places it completely narrow. Similarly, the river follow the same path. So you'll find that the seeds have collected in low areas, just the like the water gets collected in the river, ponds, lake. जहाँ पे भी low areas होंगे, that the water will get collected. How river flow? So river follow the shape of the land. जिस पाथ में वो रिवर फ्लो कर रही है, सो उस पाथ में जैसा शेप का लैंड उसे मिलेगा, दैट इन दैट शेप द रिवर विल फ्लो. अगर स्ट्रेट पाथ है, इट विल फॉलो द स्ट्रेट. इफ इट हैज अ लॉट ऑफ कर्व्स, इट विल फॉलो दैट. ओके, इन सम सिचुएशन क्या होता है, जब रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, सम सिचुएशन इट चेंजेस द पाथ ऑफ द लैंड. ठीक है, नाउ इंडिया में आप देखोगे कि हमारे प्यारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं. सो इन नदियों में आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत है. अब यहाँ बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं. जैसे कि इम्पोर्टेंट जो रिवर्स है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, बहुत सारी नदियां हैं. सो आप देखो कि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स ना. आप ये देखो कि दिस इज द ईस्ट. इन ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी. एंड
साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। सो मोस्ट ऑफ द रिवर दे फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये रिवर फ्लो होते 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 ये कहाँ जाती हैं, ये बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, सो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स ये आइदर दे फॉल, दे मीट हियर इन द बे ऑफ बंगाल और इन द अरेबियन सी। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स आप देखोगे जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ऑल दीज रिवर्स ये कहाँ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। ओनली टू रिवर्स, रिमेंबर इट इज ओनली टू रिवर्स दैट मीट इन द अरेबियन सी, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। बस दो नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। ठीक है, सो आप देखो कि ये जैसे गंगा, गंगा originates from the Himalayan region and it follows a very long path. It crosses many cities, बहुत सारे cities को क्रॉस करके फिर फाइनली ये कहाँ एंड होती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, सो मोस्टली रिवर्स दे एंड अप इन सम सी एंड ओशन। ठीक है, बट इंडिया में एक ऐसी नदी है, this river does not end in the ocean and that river is Luni river. ये एक river है, it originates in the Aravalli range in Rajasthan. Aravalli range एक mountains का group है, वहां से ये river originate होता है, that is Luni river, and ये flow करती है। ठीक है, it is a major river of Rajasthan. It flows but it will not flow into the sea. तो ये कहाँ जाके खत्म होता है, it ends up in the marshy land of the run of Kutch in गुजरात। आप देखो यहाँ पे कहीं गुजरात में कहीं एंड होती है, ये सी में मिलती नहीं है। ठीक है, सो इट्स अ सीजनल रिवर। सब बारिश के टाइम में जब बारिश होती है इट हैज़ अ लॉट ऑफ वाटर, बट समर में ये ड्राई हो जाती है, सो इट्स अ सीजनल रिवर। बट अदर रिवर्स आप देखोगे कि जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, दे आर पेरेनियल रिवर्स, मतलब पूरे साल इसमें पानी होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर रिवर्स। नाउ life in water. Now you see that there are a lot of animals for whom water is their home. Na? If you have ever get a chance to go inside the water, अगर आप कभी ऐसा हुआ हो कि आप ओशन में आप डाइव किए हो, यू हैव might have seen a lot of animals living in the water. ना, बहुत सारे animals and plants पानी में रहते हैं ना, देयर इज अ होल इकोसिस्टम देयर। सो आप बताओ कि कौन कौन से एनिमल्स आप पानी में देखते हो। जनरली हम अपने घर के पास अगर कोई पॉन्ड है या लेक है तो वहाँ पे आप बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स देखोगे कि जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल ना, वाटर स्नेक्स, दीज आर वेरी कॉमनली सीन ना। घर के आसपास अगर पॉन्ड है या लेक है तो आप जाकर देख सकते हो, आपको दिख जाएंगे फ्रॉग्स, फिशेस ना। So there's a lot of animals who live in the water, no? Like crabs, jellyfish, seal, no? Sea urchin, shark, lot of a dolphin, octopus. There are a lot of animals who live in water. Not only animals, it is a home to lot of plants also. Okay? सो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं और जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर फीचर्स ना। Like the animals who live on the land, they have a legs to walk. But the animals who are living in the water, they have a fins. They have a fins to swim. The animals who live on the land, they have a lungs to breathe. ना, वो तो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं ना, so they have a lungs. But the animals who live in the water, they have gills or they breathe through their skin. So you will find that a lot of
डिफरेंट फीचर्स, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना टू सर्वाइव इन वाटर. They have a special body type so that they can survive in water. uh, Here you see dragonfly. So flies fast, lays eggs near water. So ये dragonfly आप घर के आसपास देख सकते हो ना, ये बहुत तेज से उड़ते हैं, बहुत तेजी से उड़ते हैं. And where they lay eggs? They lay eggs near the water and eats mosquito. ये क्या खाते हैं? मॉस्किटो खाते हैं और अपने eggs को water के पास ले करते हैं. Water scorpion. So these are the insect with pincers. अब देखो बहुत sharp से इनके है ना, these are called pincers. Lives underwater. पानी के अंदर रहते हैं. Breathes using a tail tube. कैसे breathe करते हैं? They have a tail tube. Now you see कि they have special features. If they are living in water, they have special features. Water snake. A harmless water snake that eats fish and frogs. Now बहुत सारे snakes पानी में रहते हैं और वो क्या खाते हैं? Fish and frogs. Reeds. It is an edge plants. आप देखे होंगे कि पॉन्ड या लेक के साइड में बहुत सारे लंबे लंबे घास निकल आते हैं. So they are called reeds. No, they are tall grasses basically. So they grow along the edges of ponds, tall and grass-like. They're grass-like, ना लंबे लंबे grass की जैसे होते हैं. Pond heron. So it is a bird with a long legs that stands still to catch fish. आप देखोगे कि some birds they have a very sharp eyesight and they can catch the fish while flying. बहुत जल्दी से वो फिश कैच कर लेते हैं ना. फिश तो पानी में स्विम कर रही होती है बट दे हैव अ एबिलिटी ना, दे कैन कैच द फिश. सो लाइक दिस इट इज अ पॉन्ड हेरॉन. फ्रेश वाटर टर्टल. सो दीज टर्टल आप देखो कि इसके फीट्स कैसे वेब्ड लाइक फीट्स दे हैव अ सॉफ्ट सेल्ड टर्टल दैट लिव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स. ये छोटे से टर्टल्स होते हैं, ये पानी में कहीं पॉन्ड में या रिवर्स में रहते हैं दीज टर्टल्स. लोटस एंड वाटर लिली. सो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स ना, फ्लावर फ्लोट ऑन द वाटर. आप देख सकते हो कि अगर लोटस या वाटर लिली दे फ्लोट, the flowers float on the leaves also float on the water, right? But their roots are embedded in the pond bed. But उनके roots क्या होते हैं ना, ये बेड पॉन्ड बेड या रिवर बेड में वो रूटेड होते हैं. ठीक है. सो दीज वाटर लिली एंड लोटस दे हैव अ रूटेड फ्लोटिंग. रूटेड मीन्स their roots are fixed in the at the bottom. Okay. Water hyacinth. So these are free floating. It means their roots are not rooted. Means ये deep inside इनके roots fixed नहीं होते हैं. Like lotus and water lily, their roots are fixed. ना, in water hyacinth, their roots are not fixed. They are just like floating. They can float anywhere. Okay, their roots are just lying below the surface of the water. You can see the roots. Okay, and they grow very fast. And they spread on the water very rapidly. So these are, you can see, plants and animals around the water or inside the water also. Now, आपने देखा कि animals have this special features so that they can survive in water. Similarly, the plants also have some special features so that they can survive in water. आपने देखा कि we have a three types of water plants. The first one is the floating water. ना उनके roots fixed नहीं होते. They can float here and there. This is water hyacinth. Rooted floating plants आपने देखा कि lotus and water lily, their roots are fixed. Okay, and we have the edge plants.
So ये कहाँ grow करते हैं? To the edges of the ponds, lakes. This is reeds, long grass kind of a plant it is. So plants also have some special features so that they can survive in water. आप कभी देखोगे कि लोटस या वाटर लिली के लीव्स कैसे होते हैं? It is a waxy coating. So आप देखो कि अगर पानी आप वाटर ड्रॉप्स डालोगे, it will not be absorbed. It will just it will feels like some wax coating is there. Okay, wax coating makes this leaf waterproof so that it do not get damaged because of water. Okay, that's the reason that it helps them to stay healthy in the water without getting damaged. No, because इनके पास एक वाटर वैक्सी कोटिंग होता है जिसकी वजह से लीव्स आर नॉट डैमेज ना लीव्स डैमेज नहीं होते हैं और ये विदाउट एनी हार्म विदाउट एनी डैमेज दे कैन remain healthy. There is an activity here. Visit a local water body like a pond, lake, or aquarium with your teacher or parents and observe life in and around the water body. आपको क्या करना है अगर घर के आसपास कुछ पॉन्ड है या लेक है या एक्वेरियम है you go there you visit the place okay and observe what kind of a plants animals are living in the water. Hmm? So based on that you can describe the features ना आपको पहले नाम बताना है which bird or animal you have seen, what kind of a mouth or a beaks they have, how they are moving, hmm? And you have to draw a small rough diagram. ठीक है? So like a fish. So fish have a round mouth facing upward and how they move? They move with the help of fins. Pond heron, हमने देखा ना, this is a bird. They have a long and pointed beak through which they can easily catch their fish. Hmm? They have a thin legs. Huh? So this is the bird. What other animals you can see? Frog. Na? They have a wide mouth and they have a very webbed feet. Na? Because of the webbed feet, they can easily swim in water. Duck. How is the beak of the duck? It is a flat beak. Na? You can see here, it is a flat beak. They also have a webbed feet so that they can swim in water. Turtle कैसे होते हैं? They have a small mouth. They have a short legs. Legs बहुत छोटे होते हैं and they are webbed feet so that they can swim in water. Okay. So try to gather more and uh, more animals you can see and write all these features and the name. Okay. Now plants. ना pond and lake के पास आप plants भी बहुत सारे देखोगे. So plants floating above the water. So it is a lily, water lily. Local name, what is the local name of lily? It is कुमुदनी. इसे कुमुदनी बोलते हैं. Plants under the water. So आप देखोगे कि there are some plants which live under the water. आपको वो बाहर दिखेंगे ही नहीं. They completely submerged under the water. That is a tape grass. So the local name is swala. Hmm. Plants whose roots are in the waterbed but are seen above the water. अब देखो कि वैसे plants जिनके roots तो fixed होते हैं but the plant can be seen above the water. It is lotus. In Hindi we call it as a kamal. Hmm. Okay, so this is an activity. So what you have to do is that you have to take a piece of a paper and put a drop of water on it. So आप अगर पेपर लोगे और उस पे कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे आफ्टर समटाइम्स क्या होगा it will absorb the water it will shrink or even it may tear ना फट भी सकता है. Now second
what you can do is that color the paper with a wax crayon. आप पेपर को लो और crayon wax ना wax crayon से आप उसको color कर दो. Now put the water. What you will observe? You'll find that water is not getting absorbed. पानी absorb नहीं होगा. So the same thing happens with the plants which are living in the water. They have a waxy coating. Na? So when we place a drop of a water on a plain piece of paper, the paper absorbs the water and becomes wet and wrinkled. But when the paper is colored with a wax crayon, the water does not soak into it. ना पानी absorb नहीं होता. Instead, the water stays on the surface as a small round drop. ना पानी absorb नहीं हो रहा है, it will remain as a small drop. The same thing happens with the plants which are living in water. Their leaves are having a waxy coating. Because of that, it prevents them from the water damage. Now in the water, there are a lot of animals living, plants living in the water. So there is a complete food chain. ना कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ होती है, कुछ और भी बड़ी मछलियाँ होती है. So there is a complete food chain. छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, ना. So there is a food chain is maintained in the water. Okay, so small organism or tiny organism is eaten by small fish. Small fish are eaten by big fish. Big fish are eaten by birds, crocodiles, even the humans. So you see that all living things depend on each other. There is a complete food chain. Na? We all depend on each other. Now, water conservation. आप देखो कि हमारे पास पानी तो बहुत है, but majority is the sea water, which is not fit for drinking. So we need to save water. Fresh water is very little. ना fresh water तो बहुत थोड़ा है. It is in limited. So we need to conserve the water. And water is needed by all living beings. So if we will waste water, अगर हम पानी को waste करेंगे, there will be a shortage, right? And we don't want that. ना अगर आप को बोला जाए कि you don't need to take bath daily क्योंकि पानी नहीं है, you don't have to bath daily. Once in a week you have to bath. Now imagine how you will feel. Not good. ना so for this we need to conserve the water. अगर हम पानी को बचा कर रखेंगे ना wisely use करेंगे, then this type of a problem will not be there. So how we can save water? So make sure that you always turn off the taps. ना हमेशा नल को आप बंद रखो. If there is a leaking taps, repair it immediately. Harvest rainwater. Na? Rain is the main source of the fresh water on the earth. So we have to conserve each and every drop of the rainwater. Reuse water. Na? We can reuse the water. Like uh, at a home, if you are using the water to wash your vegetables, that water you can again use it to water your plants. Then क्या कर सकते हैं? We should plant more and more trees. ना जितने ज़्यादा हम plants लगाएंगे, we will have more and more rain. Okay? Now, this is some interesting things you should know. Uller Lake. How many of you know about Uller Lake? It is one in Asia's largest freshwater lake. It is in Jammu Kashmir. Okay, it is a freshwater lake और एशिया का सबसे बड़ा freshwater lake है Uller Lake. So if you go visit Kashmir, कभी आप जम्मू कश्मीर जाओ, you must visit Uller Lake. ठीक है? Next is there is a floating national park. This is Kimbul Lamjaw in Manipur. This is a national park and it is a floating national park. It is the world's only floating national park. कभी आपने सुना है floating national park यानी कि पानी में ही ये national park है. It is in Manipur and it is in Loktak Lake. ठीक है?
इन राजस्थान आपको पता है राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, सो वहाँ पे वाटर कंजर्व करने के लिए लोग पहले क्या बनाते थे, जोहाट्स। ये जोहाट्स क्या है, ये एक काइंड ऑफ अ स्टोरेज, स्मॉल स्केल स्टोरेज टैंक्स बोल सकते हो, so that all the rain water gets collected. So क्या होगा कि नियर बाई एरिया से सारे वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इज अ काइंड ऑफ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Then in India we have the Jal Shakti Museum. You can visit that museum, and this museum is for the purpose to create awareness about the conservation of water, कि water को conserve कैसे कर सकते हैं, how we can use the water wisely, कैसे हम future generation के लिए पानी को conserve कर सकते हैं। So what we have learned in this chapter, so we have seen how water is essential for life and how the fresh water is limited. Water exists in three forms हमने देखा, solid, liquid and gas. Water moves through the water cycle. How the continuous supply of water is maintained on the earth? It is because of the water cycle. Rivers and the groundwater are the important source of water. Plants and animals depend on water, right? All human beings, all the living beings, they all depend on the water. So we must conserve the water. So that's it for today. So hope you have enjoyed the class. So please do like, share and subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye. Take care.